Sir, good evening. Good evening, ji. Good evening. Madam, good evening. Good evening, Dr. Rekha. Now we are getting more requests for songs. Okay. I said, okay, adjust कर लेंगे. हाँ, अगर टाइम परमिट हो गया तो. डॉक्टर निर्मला इनवाइट करते जाओ सबको. हाँ, ठीक है सर. Good evening, madam. Good evening, sir. Triple S బాగా నడుస్తున్నట్టుంది. Yes. Good evening, Goswami sir. हेलो. हाँ सर. हाँ बस ठीक है. Good evening, Dr. Varun ji. Good evening, everyone. And 77th Independence Day की सबको हार्दिक शुभकामनाएं. Yeah. Thank आप you. सबको भी. Sir, good evening, sir. Anil, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Basraj sir. Good evening, Dr. Umesh ji. Good evening. Wish you a happy Independence Day, Nirmala madam, Anil Sood sir, Rekha Rich madam. Good evening. Ahuja आपको sir. भी sir. Good Thank you. evening. Keshavlu sir, good evening. Sir, good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good Good evening. evening. Happy Independence Day. Wish you a happy Independence Happy Day to all. Independence Day. Ahuja sir, good evening. Namaste. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Madam, good Dr. evening. Indra. Good evening. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Good everybody. evening, Bhupender ji. Dr. Basam Raji, Good evening, Dr. Dr. Indra, Rekha Rich madam, good evening. Anil Sood, Dr. Anil sir, Nirmala. good evening. Good evening. Sir, good evening. Good evening. Good evening, everybody. sir. Good evening. Dr. Good evening. Bhupendra. Hello. Good evening, Dr. Varun, Dr. Deepa.
Good evening, everyone. Sanjeev Good evening, ji. everyone. Good evening, Rekha ma'am. Good evening, Anish sir. Good evening. Good evening, Nirmala ma'am. Yeah, good evening, Dr. Good Deepa. evening, Good evening, Dr. Sanjeev. Good evening, Varun sir. Good evening. Good evening, Dr. Rekha. Good evening, Dr. Fine. डॉक्टर वरुण, बाद में ना हम एक वीडियो सॉन्ग्स की अलग तैयार कर लेंगे. No issues, sir. हाँ, then मतलब थोड़ा सा डेकोरेट करके जी we'll sir. put on the website. We'll do it, sir. I'll do it. No issues. Only the songs, huh? हाँ जी, हाँ जी. Of course, every webinar we are going to upload on the website. That will be there. But songs we can have another video and that will be a spotlight also. the I'll do title. it, sir. I'll do it. Good evening, everyone, and happy Independence Day. Good Same evening. to you, sir. Good evening, आवाज Dr. नहीं आ रही थी. Good evening, Savita ma'am. I think there is no clarification in the image of each and everyone. मेरी फोटो आ रही है ना. आ रहा है ना सर? Very good evening to all. मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा है. नाल आए ना. फुल स्क्रीन में आ रहा है सर सबका? हाँ, स्क्रीन में आ रहा है, बट वीडियो जो है सभी के क्लियर नहीं है. हमारा लैपटॉप में तो अच्छा ही आ रहा है सर. गुड इवनिंग पॉला. तो मेरा लैपटॉप खराब हो Dr. गया. Paula, Dr. Sharja. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening, all. Good evening, everybody. Good evening, Goswami ji. So, Good evening, everyone. Sanjeev sir. so Dr. Upendra म्यूट पर हैं. गोस्वामी बड़ी देर बाद अच्छा. so 8 o'clock. गोस्वामी मैं क्या बड़ी देर we'll बाद start. अच्छा. Yes, sir. Dr. Upendra is speaking something because I can't hear him. I can see his lip movement. Upendra. He's practicing. He's practicing. अच्छा, he is practicing. गाना. He Okay. doesn't need practice. Sanjeev sir, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, Dr. Lalit. Evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Dr. Savita. Let's start now. Sir, Good let's evening. start, sir. Good evening. Nirmala. So I, on behalf of Non-Communicable Diseases Prevention Academy, I welcome you all to the Independence Day celebrations and saluting our freedom fighters, because of which we have got the independence and we have been living with the freedom of speech and hello. Yeah. The chairperson Anil Sood sir has come up with an innovative idea of celebrating the Independence Day today, the 15th of August, with a different program wherein we remember our the sacrifices made by our soldiers and the warriors, freedom fighters. We remember them, and at the same time we also have our members participate in the form of the patriotic songs, wherein we have received the video presentation of our members of NCDPA. I welcome you all to this webinar of NCDPA, and thank you all for joining. I now invite the chairperson of NCDPA, Dr. Anil Sood sir, to give the welcome address. प्यारे साथियों, जय हिंद. हम नेशनल एंथम से शुरू करेंगे आज का दिन. डॉक्टर वरुण. Or we can sing together. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तिरंगा तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे जय जय जयकार जन जन गण गण मंगलदायक जय जय हे भारत भाग्य विधाता विधाता जय जय हे जय जय हे जय जय हे जय 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 हे भारत माता की जय हिंद। जय। जय हिंद। भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। मातरम। आज का दिन बहुत शुभ है। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं हमारे 76वें इंडिपेंडेंस डे की 77। आज से 76 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए अनेकों लोग कुर्बान हो गए, लाखों के घर उजड़ गए, लाखों लोगों ने लाठियां खाई और जेलों में गए, अंग्रेजों की अनेक तरह के अत्याचार सहे। आजादी की लड़ाई में बहुत से नेताओं का योगदान रहा है। जिन नेताओं में प्रमुख आप जिनको जानते ही हैं, जिनके बारे में आज रोज गुणगान करते हैं, महात्मा गांधी जी जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे तेजवान नेता थे जो इस लहर में जुड़ गए। लेकिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे हमारे युवा नेता थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने हमें नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाला लाजपत राय जिन्होंने लाठियों के प्रहार झेले, अंग्रेजों की लाठियों के, और वीरगति को प्राप्त हो गए। और उनके ही साथी जो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, लाल बाल बाल, तो बाल गंगाधर तिलक जी से जो अंग्रेज समझते हैं कि इंडिया में जो अनरेस्ट शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उनके जनक दाता वो थे। और विपिन चंद्र पाल को वो कह रहे थे कि सबसे तेज रेवोल्यूशनरी विचारों वाले इंसान थे। और इन सबके विचारों से प्रभावित हुए भगत सिंह जी और अनेकों नेता, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और भी कई इनके साथी थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हम लोग कम जानते हैं, जैसे कि करतार सिंह सराभा जी, जिन्होंने 1905 में ही अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया और वहां से वो शुरू किया इस गदर पार्टी का, और अलग अलग देशों में जाके उन्होंने गदर पार्टी का बनाई। और जब हिंदुस्तान में पहुंचे यहाँ उन्होंने काफी उनके फॉलोअर शुरू हो गए, तो अंग्रेजों ने उनको पकड़ के दो साथियों के साथ उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। और शहीद उधम सिंह जी जिन्होंने जलियांवाला बाग के कांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक डायर का पीछा किया और इंग्लैंड की धरती में जाके उसको मारा, उसको भी वहां इंग्लैंड में फांसी चढ़ा दिया, मौत की सजा दी गई। और मदन लाल ढींगरा जी जिसने के लॉर्ड कर्जन को मारने का जिम्मा लिया था, क्योंकि वो बंगाल के डिवीजन से बहुत ही परेशान थे और वो विपिन चंद्र पाल से बहुत प्रभावित थे। उनको जब उन्होंने मारने का प्लान बनाया तो वो कर्जन विली थे जो उनके सीक्रेट पुलिस के चीफ थे, वो मारे गए, इसके कारण उनको फांसी दी गई। इनके साथ ही और भी हमारे कई सेनानी थे जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, और उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, बहुत सारे फैमिलीज ने उसके सब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं झेले हैं। और मैं थोड़ा गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे ताऊ जी जो थे वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी थे, और उन्होंने उनके कई जो उन्होंने प्लानिंग करते थे उनके साथ रहते थे। उन्होंने उनको स्पाइंग का काम दिया मेनली, कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों को पीछा करते थे और उनकी जासूसी करके इनको खबर देते थे सारी। और दूसरा उनको
आर्म्स एंड एम्यूनिशन का चार्ज दिया गया, बम बनाने का काम उनको दिया गया। एक दिन क्या हुआ कि हमारा गांव जलंधर के पास ही है मलसियां, तो वहाँ रात को आके अंग्रेज मेरे छोटे ताऊ जी जो अभी 10 साल के थे उनको उठा के ले गए, और मेरे दादाजी भटकते रहे सारे पंजाब में अलग अलग जेलों में, उनको पता नहीं लगने दिया कि वो कहाँ है। तो वो जाके उनको कहा है कि एक बार एक अंग्रेज अफसर को मिले कि मैंने एक बेटा तो देश के नाम कर ही दिया, छोटे बेटे को भी कर देता हूँ मैं। तो मेरे दादाजी को जब पता चला तो वो उसी रात घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज रात सारा सामान उठा के आप यहाँ से निकल जाओ। हम उनके यहाँ 5 घर थे, वो शहर उस गांव के मुखिया थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं साथ लिया। 4 बेटों और 3 बेटियों को लेके मध्य प्रदेश में कहीं अज्ञात जगह पे चले गए। फिर वो धीरे धीरे छुपते छिपाते कभी सागर, कभी इंदौर, कभी भोपाल। और मेरे पिताजी जो तब 10-11 साल के हुए तो किसी किराना की दुकान पे नौकरी की, और मेरे दादाजी ने भी कहीं ऐसे छोटी मोटी नौकरी की और काम चलाना शुरू किया। जब उधर मेरे ताया जी अपने कार्य में बहुत सक्रिय थे, लेकिन फिर एक बार जब सब लोगों का ठिकाना पता चल गया तो उनको भी पकड़ा गया और वो 14 साल जेल रहे, उम्र कैद, उनको सजा सुनाई गई। और जब वो पकड़े गए फिर तब तक हमारी फैमिली कानपुर में सेटल थी, फिर वो वहीं सेटल हो गए और मेरे फादर वहाँ एक स्टोर चलाने लगे धीरे धीरे, और साथ में पढ़ाई कर की उन्होंने। एमए पॉलिटिकल साइंस की, उसके बाद आईसीएस की परीक्षा भी दी और पास की, लेकिन उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस का सुना हुआ था, उन्होंने भी कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करूंगा। ही वॉज अपॉइंटेड डिप्टी कलेक्टर इन सम यूपी डिस्ट्रिक्ट बट ही रिफ्यूज्ड। तो मेरे ताया जी जब जेल से छूट के आए तो एक अखबार में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहने गए कि आपको हम मिनिस्ट्री देंगे, लेकिन वो उन्होंने कहा मैं सिर्फ देश की सेवा करना चाहूंगा, चाहता था, वो मैंने किया, अब भी करता रहूंगा। तो दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ व्हिच आई एम रियली प्राउड। तो मेरा संदेश ये है आप सबको कि हमें अपनी जो बलिदान दिए फ्रीडम फाइटर्स ने, उसको अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम किस कीमत पे हमने आज़ादी पाई है, और वो देश के लिए आगे बढ़ के काम करें, और ताकि देश हमारा एक बार फिर से नंबर 1 बने, जो पहले भी नंबर 1 हुआ करता था जब अंग्रेज नहीं आए थे। तो जय हिंद। मैं इसके साथ ही मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी को आग्रह करूंगा कि वो अपना कुछ विमेन पावर के बारे में और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे। सभी को मेरा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रणाम, सादर प्रणाम और नमस्कार, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। काफी लोगों के जो वीर पुरुष और महिलाएं थी उनके नाम हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल सूद ने बताए हैं, लेकिन इसी के साथ में मैं हमारे यहाँ पे उपस्थित प्रेसिडेंट डॉक्टर किंजवड़कर, प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर बसवराज, आदरणीय रेखा मैडम और सभी सीनियर्स और उपस्थित सभी ऑफिस बियरर्स और ईबी तथा सभी श्रोता को नमस्कार करता हूँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे देता हूँ। आज हम सभी लोग सर्वोच्च हमारा एक पर्व है जो हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं, जो 77th एक हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको स्वतंत्रता संग्राम दिवस के रूप में हम लोग मनाए जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि कल मोदी जी ने विभीषिका दिवस को मनाया है, मनाना नहीं बोलूंगा मैं, उसमें याद किया है हमारे लाखों लाखों लोग और कई वीर योद्धा और कई महिला वीरांगनाओं को उस समय याद किया गया। और इसी कड़ी में मैं 2 नाम जो खास तौर से जो कि एक लाइमलाइट में नहीं आए उनका बारे में कुछ एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, और ये है श्री मंगल पांडे और श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की महारानी कहलाई जाती हैं। और मैं आप सभी लोगों को, वैसे कई लोगों को ज्ञात होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आज के इस पर्व में
कि मंगल पांडे जो है एक सच्चे योद्धा थे और एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को छेड़ने वाले एक बलिदानी पुरुष थे, जो कि अल्प आयु 30 वर्ष की अल्प आयु में ही अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। उनको फांसी की सजा दी गई थी 18 अप्रैल के लिए, लेकिन सेना में, ईस्ट इंडिया की सेना में विद्रोह को देखते हुए उन्होंने 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को उन्होंने फांसी की सजा दी है और एक अज्ञात जो है प्लेस में ले जाके उनको फांसी की सजा दी है। और ये एक घृणित कृत्य जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, और इस तरीके से एक प्रथम योद्धा के रूप में हमारे मंगल पांडे जाने जाते हैं और उनको हमारा शत शत नमन। इसी तारतम्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी नारी शक्ति भी कहीं से भी पीछे नहीं है। कई नाम डॉक्टर अनिल सूद सर ने गिनाए हैं। उसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मुख्यतः नाम मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे ही उनके पति ने उनका बलिदान लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद में एक सन अडॉप्ट किया था। उस सन को अंग्रेज लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। जो एक हिंदू अडॉप्शन लॉ था उसका प्रतिकार अंग्रेज लोग करते हैं, और उस कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई को जो राजपाट था उनका, उसको सभी में वो अतिक्रमण करके लेना चाहते थे। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना चाहा तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ में न आते हुए स्वयं ही मतलब वहां पे उन्होंने आहुति देना पसंद किया। और उन्हीं के बारे में जनरल ह्यूरोज, जो उस वक्त के अंग्रेजों की तरफ से इस महायुद्ध को लड़ने वाले थे, वो उन्होंने कहा था कि हियर ले द वुमन हु वाज ओनली मैन अमंग्स द रिबेल्स। तो आप देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से दोनों हाथ में तलवार लेके अंग्रेजों के दांतों तले चने चबाया करती थी काफी अंग्रेजी सैनिकों को, और उनकी सेना में शामिल काफी सैनिकों को उन्होंने इस तरीके से बर्बाद किया और उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया। और इन दोनों वीर तथा वीरांगना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, अंकित है। और 1828 में महारानी लक्ष्मीबाई ने काशी में जन्म लिया और 1858 की अल्प आयु में वो वीर गति को प्राप्त हुई। मंगल पांडे व रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बारे में और भी कई चर्चित किस्से हैं जो कि उनकी वीरांगना और वीरता के परिचायक है, उसको जरूर पढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों को या आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को सभी को समझा सकते हैं कि ये आजादी हमको आसानी में या तस्तरी में भेंट करके नहीं मिली है, बल्कि ये आजादी हमको काफी संघर्ष के बाद में मिली है। तो इसी तारतम्य में पुनः आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Goswami. Now I invite Dr. Deepa to highlight some of the freedom fighters from South India. Thank you, Anil sir. Good evening and happy Independence Day to one and all. Myself, Dr. Deepa from the southern state of Kerala. How do you feel if you have to pay exorbitant taxes but hardly any benefits? How do you feel when your best quality products are taken away and you are left with damaged and decayed items? How do you feel if you're treated as a third-class citizen in your own country? Yes, that was the state of affairs in our country, India, before 1947. The freedom we enjoy today is a result of years or even centuries of struggle, suffering, and sacrifice by the great freedom fighters of our country. Some of them were famous, many of them we have studied in our history classes, but there were many, many, many more. Dear all, today, with utmost respect and honor, I would like to pay tribute to some great freedom fighters from South India. Kerala Varma Palshi Raja was a great warrior king of northern Kerala who lived during the 18th century. He was popularly known as Kerala Simham, meaning the Lion of Kerala. He was famous for his guerrilla warfare, which was actually the longest insurgency against the British East India Company in Indian history. This war finally came to an end when the great king lost his life in an encounter with the British. We always remember Bhagat Singh for sacrificing his life for the country at a very young age
He died at the age of 23. Likewise, in the early 20th century, there lived another great warrior, a revolutionist in Tamil Nadu, Tirupur Kumaran, who lost his life at the age of 27 during a protest march against the British government. He died saving a flag of Indian nationality, which earned him the epithet Kudikatha Kumaran, which in Tamil means a Kumaran who protected the flag. Another great freedom fighter from South India was Abbaka Rani, the first Tuluva queen of Ullar, Karnataka, who engaged in a battle against the Portuguese in the 16th century. She was one of the first women to resist colonialism and foreign invaders. The queen repulsed Portuguese attacks for over 4 decades. Rani Abbaka earned the name Abhaya Rani, fearless queen, for her bravery. Today, on the 77th Independence Day, I bow my head before all the great warriors who lived and died for the freedom of our country. Jai Hind. Thank you. Now request Dr. Varun to play the first song. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। ओ, ओ, जलते शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। Thank you, Dr. Varun. Now you request Dr. Nirmala to start with the further proceedings. पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं। It's a nice song and it's a different program as envisaged by our chairperson, Dr. Anil Sood sir. I now invite, it's an honor and privilege to have the President of Indian Academy of Pediatrics, Dr. Upender Kinjodkar ji, gracing the occasion, and over to you, sir. Good evening, Jai Hind, everybody. Thank you so much. Respected Chairperson, Dr. Anil Sood sir, Secretary Dr. Nirmala Madam, Vice Chairman Dr. P.P. Goswami, immediate past Chairperson of the chapter, Dr. Ekha Harish Madam, and of course all the OBs, and Dr. Shailaja Mane, Dr. Paula Goel, all my dear colleagues who are here, Dr. Kesavlu, respected Dr. Ahuja sir, Dr. Kaul, Dr. Sri Sailam, Dr. Sanjeev Goel, of course our President-elect Dr. Basavaraj, and everybody, those who have joined in. It's a great honor to be here. Dr. Ahuja sir, आपका mute कर लेंगे? Dr. Sood sir, बहुत बढ़िया आपने शुरुआत की है. For 2 reasons, I would say.
first of all, the way you spoke about your family's contribution, we were not aware, and it was a pleasant surprise. और वाकई में हमको proud feel हो गया कि हमारे किसी member के family का इतना बड़ा योगदान रहा है. So our salutation to all your ancestors and the way they have fought and then they have contributed and without getting anything in return. When something was offered in return, they just offered, they said, this is our responsibility. I think this is what each one of us has to learn. So our salutations to each one of them. Thank you so much for sharing those stories. And of course, all of us know the contribution of Rani Lakshmibai and even his freedom fighters from entire country. I think without that, it would not have been possible. जैसा VP sir ने कहा कि वो हमको ऐसे मुफ्त में नहीं मिला है, because we have to have a lot of struggle and everybody has contributed, and 15th August just gives an opportunity. और सर ने अभी जो गाना कहा कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, I think that is what the dream each one of us is having, that enough is the tag of developing nation India, and we want to be called as developed nation. And our dear Prime Minister also has promised that probably in a decade or 2 decades time, our country would be into that category. And for that, the most important parameter would be always taken by the world when it is considered any nation as developing or developed is the health parameters. And again, the responsibility lies hugely, because again, the health parameters of our own neonatal mortality, our own infant mortality, and all those statistics and indices, maternal mortality, everything comes in when a country is offered a status of a developed nation. So I'm sure all of us and IIP itself, on behalf of Indian Academy of Pediatrics and its 42,000 members, I'm completely, sold out to this idea that the well-being and health of our children is our priority since last 60 years, since 64. So we have all started working when it had started in the adolescence. Our freedom fight had started, and now we are 60 years into it. And every year with more strength, more vigor, we are all contributing to that. And I'm sure it is going to happen over the years as we go subsequently. And surely one day we would be definitely having not only as the largest, biggest opinion makers of child health as far as India is concerned, but globally recognized body, and that is I'm 100% sure about. But when I talk about it, I'm sure that the biggest thing which we have come to realize that we talk about external threat of this country. Today we remember our soldiers. And when I go and talk to the school children because of Sankalp Sampurna Swasthya, I ask them only one question: which are the 2 biggest threats for India? And then immediately the answer comes that maybe Pakistan and China. I said, let's not bother about external threats. Our army, our prime minister, our defense minister, everybody is capable of taking care, and because of which all of us can take chain ki neend at night. So we are all happy for that. But biggest internal enemies that all of us need to fight and make aware are sugar and salt. I am sure that each one of us should be totally convinced and have to put in entire efforts so that our next generation friends, again, the government of India has released these guidelines, and if you can see the figures that the way hypertension, diabetes, obesity is increasing disproportionately. I'm really scared what would happen if we are not able to do these efforts right now. So SSS is nothing but it's a complete program of non-communicable diseases, and we want to have a healthy society. I appeal today to each one of you who is logged in today for this program to get committed, and then at least in 5 to 6 schools, wherever you are, I'm sure each one of us can do it. It just takes 45 minutes for doing the program in a junior class, and it takes just 2 hours, and we can do it everywhere, wherever we are. So we are fortunate to have all of you committed soldiers of NCDPA and who want to see that there should not be any children suffering from all these disorders. And if all of us work together, I have no doubt in my mind, because it's not only a program of 23, 24, 25 that we have talked about, but it is a continuous program, and it has to work in tandem with the rest of the programs so that we have a great society in future, and we are truly called as developed nation. So let's all on this 15th August, I appeal to each one of you to join hands and give as much contribution for prevention of non-communicable diseases so that we have a very Sashakt and Saksham India. Thank you so much for your kind invitation, and it was a great evening to be with all of you, and let's keep working together. Jai Hind, Jai IIP. And I request you to present one song, sir. Oh, Yes. Yes. We heard you earlier. We would like to hear you now. I'm sorry, Anil sir ने कहा था मुझे, but I could not send any recording. But okay, अभी live कर दीजिए. एक live छोटा सा कोशिश करता हूँ. Yeah, thank you. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, और देखा जापान. माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान.
सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. That was wonderful. I now invite our President-elect, Indian Academy of Pediatrics, Dr. Basraj sir, to say a few words and address the members. Thank you, Professor Dr. C. Nirmala Madam. Respected our National President of Indian Academy of Pediatrics, Dr. Upender ji, National Chairperson of our NC Non-Communicable Disease Chapter, Dr. Anil Sood ji, Founder Chairperson, who is the mentor of Non-Communicable Disease Chapter. She's taken a lot of efforts to establish that chapter, none other than Professor Rekha Harish Madam, and Dynamic Secretary of the chapter, Dr. C. Nirmala, and our Vice Chairperson of the chapter, Dr. V.P. Goswami, and Treasurer, Dr. Professor Shailaja Mane, and all other senior dignitaries like Dr. Keshavalu, Dr. Violeto, Dr. Deepa, Dr. Savita Nagpal, Dr. H.V. Kotresh, Professor V.K. Ahuja sir, Dr. Varun, and all others, Dr. Sri Sheelam, our past National Executive Board member from PATS, and all others. Really, it is a very meaningful way to celebrate Independence, 77th Independence Day, under the guidance of Dr. Anil Sood and Professor Rekha Harish Madam. We all know that independence struggle which started very long back in 1957, also 1857, almost 90 years of struggle, where we got an independence on midnight on 15th of August, 1947. Today we are all here, even in a Zoom platform. This is because of our independence and democracy. And to make it more meaningful, our Honorable National President Dr. Upendra ji is already brought out. We are developing very fast in a non-communicable disease, but not in an economic. So we need to bring it down the non-communicable disease. In that way, Indian Academy of Pediatrics and our non-communicable disease chapter really, they're putting a lot of effort over a decade. Dr. Upenji with the SSS program, where we are sensitizing across the nation, where this is taking it in a big shape. I'm sure in the coming days, the similar program, even in 2024, will make it a more meaningful way to bring it down the non-communicable disease and progress in an economic front. That's what we really looking at. And coming to the IAP, IAP is always for a meaningful way to celebrate, to bring the democracy into that. Indian Academy of Pediatrics, our all past presidents, has brought out a lot of reforms. That what we are really today, we are enjoying this democracy in that way. So in the coming days, IAP is going to take in a bigger steps to bring the more people into the academy. In that way, we have almost Dr. Upender ji, which was in a long pending constitutional reforms, which was pending, and that has been brought into the system, and lot of changes which has been made in the present constitution, that's going to be executed from in a couple of days from now. So that's also shows how democratically the Indian Academy of Pediatrics trying to take the advice of a senior and also bring the new blood into the system that will make our academy
going to be shortly it is going to be now we are next to the American Academy of Pediatrics. In the near future, we will surpass them and will do the meaningful way of how do we take care of quality of care of the children in the not only in India, even behind the borders. With these few words, wish you all the best for NCD for making this Independence Day in a meaningful way of celebration. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Nirmala Madam, can I add one more thing? Yeah. Thank you so much. Just wanted to know, make everyone aware that on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav 75th anniversary of Indian independence, Indian Academy of Pediatrics is recognizing the contribution of all those seniors who were born before 15th August 1947. And we have personally sent a certificate of recognition to all those senior members across the country, and their contribution is respected, acknowledged. So I request, there are maybe a couple of you that in your area, if they have not received, because the IIP birth date list is not updated. So my humble request, those who have not received it, please inform us immediately. We will be taking care of that. It will be duly delivered to them also. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. We'll let you, if all the members please look into it, and then we'll forward the names to the Central IIP office. Thank you so much, and thank you, Basraj sir, for such nice words and taking it forward and coordination with the American Academy of Pediatrics, and definitely NCDPA will take it forward in reducing the non-communicable diseases and improve the health of the children by improving the physical activity, reducing the screen time, and definitely all our members are taking it forward, the SSS program, and many workshops are happening all over the country as well as in both the Telugu states. And sir, a small bite from you, sir, Basraj sir, on the occasion of Independence Day. Would it... Hello, are you there, sir, Basraj sir? Carry on, Dr. Nirmala. Now I request Dr. Varun Kaul to take over for further proceedings. धन्यवाद मैम. माननीय एनसीडीपी के सारे सदस्य, डॉक्टर सूद सर चेयरपर्सन, इमीडिएट पास्ट चेयरपर्सन रेखा मैम, जिनको मेरी तरफ से शत नमन, मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ. तो आई ऑलवेज बिलीव इन मैम्स प्रिंसिपल. वो हमेशा बोलते हैं ना कि वर्क टिल यू ड्रॉप, तो हम हमेशा उनका प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं मैम. अभी तक हम गिरे नहीं कभी. सो आपकी विद योर ब्लेसिंग्स विल नेवर फॉल. वी नो दैट बिकॉज वी हैव बीन योर स्टूडेंट्स. निर्मला मैम, डॉक्टर उपेंद्र सर, डॉक्टर बसवराज सर, डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर सविता, डॉक्टर निर्मला मैम, डॉक्टर दीपा, everyone over here, you all are doing a phenomenal job. और आज जो स्टार्टिंग हमें मिली है इस प्रोग्राम की, that was awesome. So आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. और जो हमारा ये देश भारत है ना, हमें पता है कि हम as pediatricians can bring it back to the old glory. हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये सोने की चिड़िया थी, नहीं, सोने की चिड़िया बनेगी और रहेगी. सो आज मोदी जी के भाषण में उन्होंने बताया था कि 1000 साल पिछला वाला निकल गया, अगले 1000 साल आने वाले. वी आर इन द मिडेस्ट एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग, और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज के लिए, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. एंड व्हेन वी आर सेविंग वन चाइल्ड, एक बच्चे को अगर हमने बचा लिया, वी आर सेविंग द ह्यूमैनिटी, वी आर सेविंग द मैनकाइंड. एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, and especially guiding force, being a guiding force to us. Ahuja sir is there, yes, everyone. So everybody is a guiding force which is helping us to save the children. So without much ado, so मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारी पूजनीय रेखा मैम को कि वो हमारे साथ 2 शब्द इस उपलक्ष्य में शेयर करें. मैम, over to you. Thank you so much, Varun, for your affectionate remembrance and kind words. It's indeed a great pleasure to be here today. So I'd like to welcome our esteemed chief guest, the dynamic president, Dr. Upendra Kinjavadekar ji,
the incoming vibrant president of IAP, Dr. Basav Rajaji. Both of them have been the very strong pillars of support in the formation of NCDPA, in the birth of NCDPA. They did not let the APGAR score get down even to 9. Then our chairperson of NCDPA, Dr. Anil Soodji, congratulations for this innovative idea. Our brilliant team of office bearers, executive board members, and members of NCDPA, each and everyone is a gem. And esteemed members of IUP and our distinguished viewers. We are indeed lucky today to breathe in the free country and to be able to celebrate the Independence Day 77th time, which reminds us of the unwavering commitment, the indomitable spirit, and the selfless sacrifices of our Jawans, who are our true heroes, our true stars. And they have left an indelible mark on our history, and they will continue to inspire us and beyond us also for next all generations to come. Though our freedom fighters, they came from diverse backgrounds, diverse religions, diverse corners of this, yet they had one common goal, the goal of liberating the homeland from the clutches of the colonial rule. Varying from the philosophy of non-violence on one hand to the fearless defiance on the other hand, like of Bhagat Singh, the mosaic of the struggle of independence laid the foundation stone for this. They faced unimaginable hardships, endured most brutal suppression, and made personal sacrifices which are beyond measure. Many were imprisoned, tortured, gave up their lives. For all their dreams, their only dream was a free and sovereign nation. They exemplified the true meanings of the word courage, the true meanings of determination, and true patriotism. We are not even 1% of that. As we celebrate this day, we all pay our heartfelt tributes to the freedom fighters and bow our heads in gratitude and promise to honor their legacy by contributing positively to our nation, working towards a brighter and a more inclusive future. And while enjoying the fruits of dream turned real by these supreme sacrifices, we fall short of words also to thank all the people who worked for the inside the borders, the defense personnel on the ground, the police and the other security agents, even the medical professionals, the paramedical professions who have suffered and worked so much during the pandemic, the Safai Karamcharis who laid their lives just by following their occupation are our other unsung heroes. We cannot fight on borders, but yes, as members of our mother organization, Indian Academy of Pediatrics, and our own NCDPA chapter, we can help in attaining independence in our own way from NCDs by sowing the seeds of such skills by practicing and preaching all principles of healthy lifestyle, screening for these children, vaccination, and creating awareness at the right time regarding right nutrition, including food labels. And as encouraged by our president, current president, and also our future president, I am sure SSS program will contribute maximum on this front. I would like to conclude with this shloka. Ratnakar dhaut padam, Himalay kiritinim, Brahmaraj Rishiraj Dhyam, Vande Bharat Matram. जो हिमालय द्वारा सुशोभित है, जिसके पैर समुद्र के द्वारा धोए जाते हैं, जो अनेक राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ऐसी भारत माता को मेरा अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाओं के साथ I wish all of you a disease-free life ahead. Thank you. Wonderful, ma'am. Please Wonderful. mute yourself. Keep yourself muted. Dr. Ujab, please keep yourself muted.
Dr. Avija, please and muted. Sure. सो वंडरफुल वंडरफुल मैम, बहुत ही हमारे कान शुद्ध हो गए आपकी लास्ट का श्लोक सुन के. एंड इनफैक्ट द होल एसेंस ऑफ योर टॉक इज दैट आवर चिल्ड्रन, आवर फ्यूचर शुड बी हेल्दी एंड वी आर द पिलर्स which can make it possible and which will make it possible. That is 100% sure. So आज हम स्वतंत्रता दिवस को भी मना रहे हैं और इसके साथ जुड़े कुछ जो सॉन्ग्स रहे हैं और जो सॉन्ग्स our August faculty has given videos of. So I am privileged for giving me an opportunity कि मैं उनको प्ले कर पा रहा हूँ यहाँ पे. और सबसे पहला सॉन्ग जो है आफ्टर ऑब्वियसली डॉक्टर अनिल सर, सो दैट सेट द कॉन्टेक्स्ट कि हमारा जोश पूरा आ गया. सो एक सॉन्ग जो पहला मैं अब प्ले करने वाला हूं उसको गाया था एक्चुअली लता जी ने. सो ये सॉन्ग जब भी कोई सुनता है, जो भी कोई भारतवासी जब सुनेगा ना, उसके अंदर से जिटर्स उठते हैं. सो जब आज भी हम ये सुनते हैं, वी आर जिटरी फ्रॉम इनसाइड कि यार दैट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस व्हाट आवर सोल्जर्स हैव डन फॉर अस. हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा, ऊंचा उड़ता रहेगा, बट बिलीव मी, हमारा तिरंगा हवाओं से नहीं उड़ता. हमारा तिरंगा उन सोल्जर्स की अंतिम सांसों की वजह से उड़ रहा है जिन्होंने इस देश को, महान देश को अपना बलिदान देके इस पर्व तक पहुंचाया है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई प्रेजेंट टू यू द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों फ्रॉम नन अदर देन रेखा मैम.
jitters down the spine. I mean, wonderful. अंदर से जो feeling आई ना, मतलब अंदर से, it was so, exhilarating and filling us with patriotism. Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful rendition of Lata ji. And it was near perfect, I'll say, because Lata ji ko koi bhi 100 on 100 nahi unko emulate kar sakta. Thank you, ma'am. Thank you very much. So next song, all of you, is by Dr. Daljit Singh. And this is about a person by the name of Kabuliwala. So it is a film Kabuliwala, and it is related to, just a minute, let me start. So it is "Ae Mere Pyare Watan." So this "Ae Mere Pyare Watan" was a song sung by an Afghan for his love for his country. But feel जो है, अगर आप अपने अंदर फील करते हैं कि मैं अपने इंडिया के लिए क्या सोचता हूँ जब मैं किसी दूसरे पराये मुल्क में हूँ, सो वो जो फील आती है वो अपने अंदर फील कीजिए कि जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको अपने इंडिया की तरफ क्या प्रीति आ रही होगी जो वो व्यक्त करना चाहते हैं. डॉक्टर दलजीत हैज डन अ फिनोमिनल जॉब इन दिस सॉन्ग. सो ओवर टू डॉक्टर दलजीत इन दिस सॉन्ग.
So another beautiful rendition by Dr. Daljit sir. So ये जो rendition था ये मन्ना डे साहब ने गाया था. So मन्ना डे साहब के बाद जो थोड़ा near perfect sir के जितना जा सकते थे, he has been spot on. Wonderful, wonderful. So एक के बाद एक, starting from Dr. Anil sir, उसके बाद रेखा मैम, फिर दलजीत सर. So we pediatricians हम किसी से कम नहीं है ना. So everybody over here is the best of the best artists. Yeah, absolutely, absolutely. So next we will go to Dr. SP Mishra sir. So SP Mishra sir जो है, he is also one of the pioneers, and उन्होंने एक बहुत ही मजेदार गाना गाया है, मेरा रंग दे बसंती चोला. So this is a song which is very near to our hearts, ठीक है. और नए फिल्म्स में भी आया है, बट जो इसका पुराना वर्जन है वो किसी के सामने नहीं आ सकता है. And sir has sung it with so soul. So over to sir for his soulful rendition of मेरा रंग दे बसंती चोला. So here we go. That was wonderful. Dr. Daljit Singh and Dr. SP Mishra reached the finals of the Voice of Doctors contest, which was recently held in July in Jaipur. And another Dr. Major General from Jalandhar also reached. So 3 of our known people were in the first 10. And the singer from Jammu, he has won the prize. He has won the contract. Yes. In less than 50 years. Dr. Rishi Raj. He's a dermatologist. That's nice.
Wonderful, wonderful, wonderful. So all the four singers till now have been absolutely fantabulous. So हर किसी ने अपनी रूह से गाया है. बोलते ना रूहदारी जब आती है तो अंदर वो फीलिंग आती है. सो हर कोई आई कुड सी जितने भी मेरे स्क्रीन पे आ रहे थे एवरीबडी वाज लाइक जितने मिश्रा सर वो झूम रहे थे गाने के साथ एवरीबडी वाज इन फुल म्यूजिक एंड फुल सोलफुली रेंडिशन उसके साथ क्लैप्स कर रहे थे. So I was enjoying it thoroughly. I mean everybody was enjoying it and the full NCDPA team is proud of you all. Thank you very much. So after these three songs हमारे पास एक recording आई है of a speech. So I suppose sir is also here, Dr. Sanjeev Goyal. So Dr. Sanjeev Goyal कुछ ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड किया है. If sir possible, if you can just speak out the I same. think I think I'll try to speak live. So Fine, sir. recording was just a backup. Beautiful, sir. Beautiful, sir. Over to you, sir. Over to you. So before you start, sir, I just want to tell something like because I have heard the recording. So एक independence होती है tyranny से, एक independence होती है जो आक्रोश आपके ऊपर कर रहे हैं उनके ऊपर से, बट जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कोई आपको झिझोड़ रहा है, उससे आजादी कैसे पाओगे? सो उससे आजादी कैसे पाएंगे? डॉक्टर संजीव बताएंगे. ओवर टू यू सर. Thank you so much, Varun. It is wonderful being part of this group. And I'm Dr. Sanjeev Goyal. I represent West Zone NCDPA Executive Committee. And I was just wondering because we have been listening a lot since morning about independence, India getting independence. And then I heard Dr. Kinjwadekar, he says the burden of diseases is increasing. And we see that suddenly sudden deaths have increased. So I was just wondering, what is real independence? Of course, and what should be the target in the next 25 years? And ours is by definition non-communicable disease prevention academy. So we have to do something which we can help the children of the next generation to improve the health. So, and Dr. Kinjwadekar talked about diabetes, hypertension, ischemic heart disease. Believe me, I do more dieting than my father does. I think most of us must be doing that. So there is something else which is bothering us. It is not only the diet which we are concentrating upon, but diet along with something else. Because as my father tells me, he would use 100 gram or 200 gram of ghee. He would take lots of salt. He never had hypertension. So probably something else is bothering us. So that is what we should be free from, or we should develop freedom from those things. So I was just wondering, so what all can be those things? So let us take a vow to decrease the social pressure. We should be independent of the social pressures, recently, I mean, there very bad incidents happened in Vadodara, and we are reading it day in and day out, that stress is the most important thing which is killing us, and that should be one of the strategies to prevent NCDs. So how to be independent of social pressure, that we have to all work on. We are all liking, disliking, FOMOs, and we hear so much things. So let us be independent of social pressure. How and now we should all decide this strategy, but this is just eye-opening that we should all be independent. We should develop independence from social pressures. And that is taking a lot of toll on the mental strength and everything. We should be independent of the thoughts. The thoughts, they hurt us. They hurt us more than the fat or the salt or anything else. You tell something to someone, or you write one sentence on WhatsApp, things get, they explode. And that causes a lot of stress. So we should learn to be independent of the thoughts, or we should know how to control them. So that is one thing which our academy should work on. Another thing is we should be independent of the addiction. We should make our country free of addiction. We hear so much drugs going on, and even 14 years, 15 years, or 12-year-old boy having his mouth full of all the material, all tobacco and this thing. And then Akshay Kumar talking something else and promoting something else. I think that is not acceptable. That is one thing we should be free of addiction. Another thing which is killing us is, long lifestyles. We are having at one extreme, we are having sudden deaths at 20, 30, 40 years having ischemic heart disease. At the same time, people are living up to 70, 80, 90 years.
So that is bringing a lot of social pressures and financial pressures. So that is again killing us, and that is increasing the NCDs. So we should be independent financially. That is financial independence. So we should all, as doctors, the previous generation, or maybe our generation, I am now 60. So our generation has seen people, doctors working very hard. They have earned money, they have saved money, but they have not, multiplied money, or they have not seen how they can live a happy life without worrying about money. So that is one thing which is creating a lot of stress and anxiety among the people of all generations. Then we should all learn to have emotional independence. We are so much dependent upon likes, dislikes, what people will say. So we have to be independent of our emotions. So that is what I feel that our academy, which it is made of, should do something about it. Of course, the last is, you should have Zen state or the Nirvana. You should be happy. And our India is 135th in happiness index. We are progressing. We talk about infrastructure, we talk about growth, we talk about finances. But where is happiness? And if there is no happiness, we are all going to die of NCDs. So I think my message is very clear that everyone is going to do what they are doing. Government is going to bring infrastructure. Government is going to increase the financial status, the per capita income, GDP, everything is going to grow. We are taking care, we can make legislatures, but I think time is where, rather than on lifestyle, we should concentrate on life. So that is a message that we should take care of that and be independent of social pressures, independent of thoughts, independent of addiction. We should be financially independent, we should be emotionally independent, and we should state a nirvana. So that is what I wanted to convey. Thank you so much for listening to me live. Very rightly said, sir. Very right. I wish there was freedom from this also. Mobile, that will come from social pressure. Thank you, sir. Thank you very much for the words of wisdom. And believe me, we are towards the path of, actually, all of us are looking at the IQ. So nobody is bothered about EQ. So the emotional intelligence part, we are all, naive people. हम लोगों को emotional intelligence कभी किसी ने बताया नहीं इस नाम की कोई चीज होती है. But there's a book by Daniel Goleman, Emotional Intelligence, wonderful book. So I have tried to read it, somewhat retained in between. So जो निर्वाणा वाला स्टेट है सर, पता नहीं, वो तो गौतम बुद्ध को ही मिला था, बट हम कोशिश कर सकते हैं उस तरफ जाने की. जैसे रेखा मैम ने बता दिया, सबसे पहले तो वो जो हमारे हाथ में ये डिस्ट्रैक्शन है ना, सो इसको जब तक साइड में नहीं करेंगे, निर्वाणा कैसे मिलेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्ड्स ऑफ विजडम सर. सो कैरिंग फॉरवर्ड आज का सेशन, सो द नेक्स्ट सॉन्ग would be "ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू," and this song is sung by Dr. Gunjan Babeja, and she has sung it very beautifully. So over to her. Let us listen to her, how she has done it. Here she goes. मेरे वतन
He is also executive board member of NCDPA from North Zone, Dr. Gunjan. So wonderful, wonderful rendition. It was a beautiful rendition. Maza aaya sunne mein. So friends, next song we'll be hearing live from Dr. Nidhi Malhotra. So we request Dr. Nidhi ma'am to please come forward and sing the song Not live. ma'am, he's sir. Oh, sorry. Sir, please. This confusion is there always. He's always misunderstood as female. I'm so sorry, sir. It happens every time. Though I have sent that recording, but I think I'll sing like this only. It's how to live like as Dr. Goel has already told. I think I'm audible. Yes, you are audible. किसी की मुस्कुराहटों पे जो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो निभार, किसी के वास्ते होते दिल में क्या, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का वास्ते तो उधार, किसी के वास्ते होते दिल में क्या, जीना इसी का नाम है. खाना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. मिटे तो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही के नाम प्यार का. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही के नाम प्यार का. मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेंगे फूल हर कली को बार बार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो उतार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. थैंक यू. Absolutely wonderful, wonderful, sir. And this song is near to everybody's heart by Showman and Mukesh ji. मतलब too good a song, and the lyrics are phenomenal. सीधा दिल में तीर की तरह उतर जाती है sir. Thank you very much for this song. Thanks a lot. So next, I would like to invite Dr. Umesh Khurana ji कि वो भी please live song गाए. So Umesh ji, please, sir. वरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये आई विल लाइक टू थैंक द ऑल मेंबर्स ऑफ NCDPA, डॉक्टर उपेंद्र जी,
Nirmala Madam, Dr. Goswami, Anil Sood ji, everyone, and I have been enjoying these various songs दिल से. रेखा का मैडम का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. आई वांट टू थैंक. मैं क्योंकि मेरी ऐसी तैयारी नहीं, मैं थोड़ा सा एक अपना जो है एक आध कमेंट जरूर दूंगा, और थोड़ा सा जो है कि मैं ये आजादी से संबंध रखते हुए I wanted to say that during this period of getting independence in 1942, there was a Quit India movement. And what I am thinking very, very seriously now is that we in this forum should, at least I am believing, that say quit India, junk food, quit India, all these the various shops that there are, you can say कठिन काम जरूर है. डोमिनिक्स, मैकडोनल्ड्स जहाँ पिज्जा है, बर्गर है, एंड ऑल दीज है जहाँ पर सॉल्ट है, फैट है. सो दीज मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पर आकर मतलब वी इंडिया आज जो हम चंद्रयान में भेज रहे हैं, सब कुछ इतना विकास कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, दिस ब्रिटिश कॉलोनियल और अर्बन का जो भी थिंकिंग है उससे बाहर निकल के आई थिंक इंडिया इज sufficient itself to take care of our health issues, but it needs missionary zeal, which I mean to say we have got great leaders, and I am really inspired by Dr. Rekha Harish in this SSS system or SSS workshop. थोड़ा सा मैं एक दो स्टेंजा हिम्मत करके कुछ बोल देता हूँ. मैंने कोई तैयारी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है. धन्यवाद. सर फिनोमिनल. ये आप कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की थी. बहुत अच्छा गाया सर, बहुत अच्छा गाया. और म्यूजिक के साथ तो चार चांद आ जाते हैं सर. यू आर अ फिनोमिनल पर्सन एंड अ सिंगर सर. थैंक यू वेरी मच. एंड दिस सॉन्ग शोज अस द एसेंस ऑफ आवर कंट्री, आवर ब्यूटीफुल कंट्री वेयर वी लिव इन. एंड हमको कभी कभी ना वो बोलते हैं ना कि अपना जो नियर बाय का वो एरिया होता है ना, हमें लगता है हम कहाँ रह रहे हैं. बट व्हेन वी सी द अदर प्लेसेस एंड देन कंपेयर आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, आवर कंट्री इज बाउंटीफुल. हमारी देश सोने की चिड़िया है सर. एंड यू हैव संग इट ब्यूटीफुली. थैंक यू very much. So carrying forward the proceedings, now we have a talk by Dr. Savita Nagpal ma'am. So उन्होंने कुछ ऐसे concept के बारे में बताया, because I had received a recording but I think she is there and I can see ma'am. So I would like to have you on screen and ma'am please tell us about something revolutionary what you have done.
I mean, slim homes. So what is it? Let's hear from Savita ma'am. Over to you, ma'am. Thank you so much for having me on this forum. I'm actually a pathologist, but I'm so proud to be part of NCDPA. So apart from being the VP of Association of Practicing Pathologists, I'm the founder of this eco-friendly organization called Slim Homes. So every journey begins at home. And in 2017, we at Slim Homes began our journey to actually save ourselves and our future generations from all the damage that we have inflicted upon the environment by our two principal obsessions. One is combustion and the other is consumption. So Slim Homes has been operative in various fields, but I'll just restrict myself to two areas. The first is waste segregation and composting. So we have initiated waste segregation at source, which means at homes where the point of generation, and composting in two pockets of Vasant Kunj, New Delhi, which have 900 and 700 flats each. We've also initiated composting in the Government College for Girls in Gurgaon. And in South City 1, Gurgaon, we've been working with the Alag Karo team of an NGO called Sagas NGO. And now we have reached a level of about 72% of segregation at source in our 2,500 plus households. And since November 2022, we have managed to divert around 309 tons of wet waste away from the landfill, in our case, the Bandwari landfill. Apart from this, the second area where we have been sort of operating is the management of plastic waste in Gurgaon. So for this, Slim Homes teamed up with Garbage Free India. And this was done, we started in January 2020. And up until now, we have managed to divert over 90,000 kgs of mixed plastic waste away from the landfills. So out of this, the high value plastic is sent to recyclers, and the low value plastic, as well as the multi-layer packaging, you know, like we have chocolate wrappers with that shiny surface and tea packets with that shiny surface. This multi-layer packaging, this has been going towards road construction. And now more recently, it is being picked up by ITCA. In the same regard, Slim Homes has sold/distributed 180 steel tiffins and boxes, mainly to home chefs, in order to cut down on the use of disposables. Also, we have sold/distributed more than 1,800 cloth bags, which are made from either used or surplus fabric, in order to discourage people from using single-use plastic. And for our looking forward now, what we want to do is to invite everyone to Slim Homes. Slim Homes, we promote the idea of minimalism. So we ask people to declutter, and we tell them to give their extras to us. We then sell these extras at very nominal prices as pre-loved and pre-owned items at thrift sales. And the money which is generated from these sales is funneled into our projects. Secondly, we would also like to encourage and promote the use of water aerators, which are devices to reduce the wastage of water. These are very small things which are, we partnered with the Rotary Club. In fact, he was a patient of mine, the president, and we partnered with them to get these, source these from the manufacturer at cost price. And when we use these aerators, we will actually be complementing our efforts at recycling the gray water from our homes. So in doing so, we want lots and lots of people to enter the doors of Slim Homes. And thank you so much for having me on this forum to acquaint you all with Slim Homes. And I firmly believe that, you know, with the support and involvement of such august bodies like the NCDPA, we will really, I'm very confident कि हम अपने भारत को गंदगी और ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनसे हम आजादी जरूर दिलवा सकेंगे.
So thank you once again. Jai Hind. Thank you very much, ma'am. Your vision of garbage-free India and garbage-free homes, kudos. And somebody would say that, यार ये छोटे-छोटे काम से क्या होगा? No. बूंद बूंद से सागर बनता है. And we all here are there to support your venture. And it's a very noble venture. And I believe, and we all believe, that this is going to go a lot in reducing the garbage burden of our country. So you will be the pioneer of this. Thank you very much, ma'am. Just want to add, please, everybody should make their homes slim and free of clutter. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, अब हम चलते हैं last पड़ाव की तरफ. So, the last songs are there. So, सबसे पहला, Dr. Sri Sailam, मैं उनको सामने देख रहा हूँ. He has sung it beautifully. So, I can say the man in scrubs. So he has sung this song in scrubs. I was like taken aback. Oh my God, he's singing in scrubs and he sang it so beautifully. So here we go with Dr. Sri Sailam. Mera Mulk, Mera Desh. Here we go. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन Wonderful, sir. Wonderful. You have been phenomenal in this song and it was sung from heart, directly from heart. And the best surprise is you are singing in scrubs. That was too good. That was too good. And, sung from heart. Thank you very much. Thank you for this song, sir. Thanks a lot. It was Anil Sood sir called me and he said, "Arey jaldi gaao bole to." फिर मैं वही scrub में गा लिया. That's great, sir. That's great, sir. So next song we'll be having is from Dr. Manish Kalla and he is from Kenya, I suppose. So he sent his recording from Kenya. Yeah. So he has sung one of the, mind-boggling songs of Hindi cinema, which gives us jitters from inside when the music comes. So the movie is Karma.
and I hope you understand which song I am referring to. So it is Har Karam Apna Karenge Ae Watan Tere Liye, and he has sung it beautifully, and we all can sing with him. Obviously muted, otherwise wo music nahi aayega. So, but it's a wonderful song. So here we go with Mera Karma Tu from Dr. Manish. So here we go. मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हर करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए He is presently at Kenya on Red Cross assignment. I rang him up and he said, I'm a little out of touch. I said, this song is going to suit your voice so much. And he was so Sir. obliging. He sent it the same day. Sir, if this is out of touch, then what is in touch, sir? He's a powerhouse. He's a powerhouse. Yeah, it's a wonderful song and wonderful rendition. So ये हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए हमारे दिल में छुपा हुआ है और हम हमारे दिल से हमारी ये आवाज कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, चाहे अंग्रेज आए चाहे जो मर्जी आए, हमने अपना कर्म अपने वतन के लिए करना है. So That's why I selected this song at the end. So हमने शुरू किया रविंद्रनाथ टैगोर जी की हमारे नेशनल एंथम से, राष्ट्रगान से. So हम एंड करेंगे अपने राष्ट्रगीत से, so जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है. मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियोस ऑन करें
We will like to have a beautiful picture also of our celebration. Please switch on our videos and we sing Vande Mataram. Yes. And So then there will be Thanksgiving. So I'll be singing Vande Mataram. Good. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujala Sufala Malaya Jashitala Shasya Shamala Mataram Vande Mataram Shubhra Jyotsna Pulkit Yamini Pulla Kusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Jai Hind. So last but not least, so vote of thanks, Dr. Shailaja ma'am. Over to you, ma'am. Please switch on your videos, all of you. Dr. Shailaja ma'am is there? Yeah. Shailaja. Dr. Shailaja. Yeah. Unmute. You are muted, Shailaja. Shailaja, unmute karo. Unmute. Unmute karo, Shailaja. Dr. Shailaja, unmute. मैम आप rejoin करिए मैम, rejoin करिए, निकल के वापस rejoin करिए. Shweta, can you unmute Dr. Shailaja ma'am? She is unable to switch out and come back again. So वो unmute नहीं कर पा रही है और वो Zoom meet से बाहर भी नहीं आ I think any other office where DIG madam. Dr. Nirmala can do that. Paula, are you there? What's the issue? Shweta, please unmute Dr. Shailaja, no? She is not able to do. Asking her to unmute, she's not able to do. from your end you can do it, na? Oh, doctor, I can't because she has muted herself. No. Okay. Shailaja, abhi bolo. I'm able to. Yes. Are you able to listen me? Yes. Okay. Yes, बिल्कुल अच्छे से सुना जा रहा है. Sorry for the technical glitch. A very good evening to all. Thanks a lot for joining this amazing program on occasion of 15th August, 76th Independence Day of our beloved country. At the outset, I will like to thank Dr. Upendra Kinzavdekar sir, Dr. Basavaraja, who had given inspiring talk, and their internal enemies were the highlight of that is salt and sugar, and few other office bearers who had given very insightful views about quit fast food and quit NCD on occasion of this Independence Day. So
I would like to thank Dr. Anil Sood sir, Dr. VP Goswami sir, Dr. Rekha Harish madam, Dr. Nirmala and Dr. Varun Kaul for beautiful and very informative anchoring. All the gifted and passionate colleagues who had made this program an amazing and unique one. They have given wonderful performances by singing nicely, and we all have enjoyed and witnessed it. I would like to thank all the seniors and colleagues, Dr. Keswalu, Dr. Sri Sailam, Dr. Omeshji, Dr. Koteshwara, Preeti, Gunjan, Varun Kaulji, Savita Nagpalji. We have came to know about various personal things who is doing beautiful work regarding our environment as well. And we were amazed to listen the family story of Anil Sood and other colleagues as well. So I'm very much thankful to Dr. Deepa, Nidhi, Jogesh ji, Gunjan, and all the people who have made this beautiful evening really amazing on occasion of Independence Day. Thank you one and all. And I think, Sood sir, we should take this as a hint for the relaxation. Only academic things, but we should think of some relaxation which can reduce the stress of our and colleagues as well to reduce the NCDs. That's right. And to have independence from stress. Thank you. Thanks a lot, one and all. And brilliant Good night. anchoring Good by night, Varun. everyone. Brilliant anchoring by Varun. Yes, I started I said finishing my that. NCD. Very informative. Yes, yes. Yes. Thank you all. And thank you. Thank you all. Thank you all. And thank you, Dr. Upendra. See, you can see the joyful face of each one of us. Yeah. You must have It taken is a very beautiful beautiful to pictures see. of. Yeah, I'm sure I have you must taken. have taken I beautiful will pictures upload of again. these smiling faces Yes. also. Yes, I have taken, sir. That's also Freedom stress from relief. stress. Shailaja is our official photographer. Photograph. So, freedom from stress. Yes. And thank you all, and we'll call it a day. And it was a wonderful program. And thanks to Anil Sood sir for organizing this program, and Dr. Varun Kaul for taking it forward, and all the members of NCDPA and the President sir and the President-elect sir for joining us and making it wonderful and very joyful. Thank you very much. Thank you, Dr. Rekha, Dr. Goswami, Dr. Savita, everybody. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. We will remember that for a long time. Yes, sure.